My dear students, What Now welcomes you all, and we are officially opening this conclave now. What is what now? It is a question that you should ask yourself when you have been a victim of cyberbullying, cyber harassment, online abuse, sextortion, and any kind of digital malpractice. It is a very serious question today before us. Do we all think that is there going to be an India-Pakistan, India-Bangladesh war? The answer is no. The war is all about cyber. The war is all about how to fight and get rid of it. And today, What Now has come forward with this initiative to make you all What Now cyber warriors. So huge round of applause for your own self, because you have taken that time. You have come here and invested your precious time to be a part of this conclave. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, पर जो तूफानों से टक्कर ले उसे हमारे व्हाट नाउ के साइबर वॉरियर और नौजवान कहते हैं. We should always believe that when we are the victim, we are not the victim. There is a face behind the screen. वो फेस जो स्क्रीन के पीछे रह करके गड़बड़ कर रहा है वो कायर है. क्या हम कायर हैं कि उस फेस से डरें? We should be bold enough to face and fight it from the front. And our organization What Now is available always with you to support you in all forms, free of cost, from start to finish, to fight this menace. So once again, I welcome you all, and over to Dara for being so kind to me. Let's also all give a huge round of applause for Dara Singh Khurana. He is our master of ceremonies for today. Over to Dara. We are here celebrating the success of What Now and also an annual conclave. Very soon we will take you through an impact report of what we have done and how we have managed to save 31 suicides till now among youth due to collective intervention of our counselors, law enforcement agencies, all-round support. Secondly, I would like to welcome all the teachers, all the principals who are here for discussion on how they are going to take this initiative ahead in their colleges. Because it is not only about us having a call center or us having you to file the complaints, it is within the youth to protect themselves, to preserve themselves, to be sure of the digital accuracy and how they can prevent all the crimes from happening, and how they can safeguard what to post, what not to post. So all that is extremely important. So we will take you through that. We will also be doing a live demonstration of hacking, like a live hacking of somebody's phone, or how a credit card can be hacked or a deep fake can be made. And also we will be having Manashta Cyber Head here, who will be taking you through all of this, and also how to safeguard yourself on social media platforms. Because being students, we all like to go out, we all like to post pictures of where we are going, how we are moving with our friends. But besides that, we also have the perils of being on social media and being exposed to a lot of things which we are not aware of. So sir will come and guide us on how you can post so you can be safeguarded from all sorts of cyber attacks and cyber threats. Thank you so much. Looking forward to a meaningful conclave. Such a huge audience, I didn't really expect that. I do have to say, What Now is a very close to my heart initiative in which Neeti, who is downstairs waiting for some people, Nivedita, and of course Akshat, they've all come together to try and protect all of you, all of us. And trust me, it's very difficult. I just have to say, you guys are very young right now. Most of them are all young right now. All right. And we've all made mistakes. I constantly make mistakes, even at this age in my life. Online, besides other mistakes, I also make online mistakes. Some things are very obvious, which you shouldn't fall for. Some things seem very
seem incredible to actually be true. So you should, of course, everybody in the floor on the skit has performed for you to make you more aware. But more than that, it's a question you need to ask yourself, especially in times when you are alone. Because in a setting like this, what you see, you forget. But when you sit, because all of you have telephones on you, phones on you, mobiles on you, you guys use internet every single day, and things become very automatic. You stop being aware of certain things. So all I have to say is that don't make mistakes like me. Don't take things for granted, because end of the day it's going to come back and it's going to bite you, and you are going to lose your dignity and you are going to lose integrity, and you don't want that. We are here to try and protect you as much as possible. Do not take any steps that would hurt you or hurt your near and dear ones. Always be sure that sometimes, even though you can't turn to the person next to you, you can reach out to us. You have the helpline number right over there. And anytime you guys, anybody of any age, feels that there is something that they are going through that we can possibly help and guide, we are open, we are waiting to try and contribute and protect everyone. So be safe, be aware, and thank you. Allah Hafiz. Inviting the Department of Posts for this wonderful occasion. In fact, I would like to congratulate you on this initiative that you have taken, wherein you are making our public at large aware of the threats of cybercrime, cyber harassment, cyber bullying. There are a large number of avenues open right now to all of us, where we are all at the receiving end. We are vulnerable. So when we were invited for this event, we thought, why not commemorate it with a special cancellation? So we've designed this special cancellation in the form of a lock, which ensures security, and we've also engraved some of the logos which are associated with cyber security. For example, the digital key, or the private key of the blockchain, or the antivirus or anti-phishing of the emails. So those are some of the, you'll be able to have a look at the cancellation. It's available in the stall. Do we have a stall outside? So we have a stall outside, so you can have a look at the cancellation that has been released by the department. So the importance of this is that this particular event has been officially validated by Government of India. That is the significance of a special cancellation. शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और मैं इस युवा साथियों से यह आग्रह करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि मैं भारत के 1 लाख ऐसे युवाओं को इस देश की सक्रिय राजनीति में लाना चाहता हूं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पंक्ति का मैं पहला युवा हूं। मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, लेकिन मुझे सौभाग्य है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज युवा मंत्री होने का मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, हमारे मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और मैं तो इस बीएमसी के चुनाव में मेरी ड्यूटी थी, तो मैं इसलिए भी यहां पर आया था। आप सब मुंबई के युवा हो, आपसे भी यह आग्रह है, इस बदलते हुए भारत में, इस बदलती हुई दुनिया में, और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस युवा पीढ़ी के सामने विकसित भारत का सपना, 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, अगर उसका सबसे बड़ा दामोदार अगर किसी पर है तो हमारे आने वाली पीढ़ी पर, मेरे सामने बैठे हुए इन युवाओं पर है। 2047 में भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत होगा। आज भारत दुनिया के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था वाले देश से अगर कोई टैरिफ के नाम पे डराने और धमकाने का काम करता है तो वो दुनिया की पहले नंबर अर्थव्यवस्था वाला करता है। ये सब युवाओं का कमाल है।
2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, किस प्रकार से आमूल परिवर्तन युवाओं की जिंदगी में। और 2014 से पहले मैं किसी पार्टी की बुराई करने नहीं आया, लेकिन युवा होने के नाते जो इतिहास में पढ़ा जाता है, 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस सरकार थी, किस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, और मैं तो हरियाणा से आता हूं, भारत की 2% की आबादी का हरियाणा, लेकिन आज जितने भी ओलंपिक्स गेम हो, एशियन गेम्स हो, यूथ गेम्स हो, आधी से ज्यादा मेडलों पर कब्जा अगर किसी का है तो हरियाणा के युवाओं का है, हरियाणा के खिलाड़ियों का है। मैं तो धरती से आता हूं। हरियाणा भारत की 2% की आबादी का देश, लेकिन भारत की सेनाओं में 10% से ज्यादा युवा हरियाणा का इस देश की सुरक्षा कर रहा है। हरियाणा का किसान दुनिया और देश में किसानी के क्षेत्र में जाना जाता है। मैं तो आप सबको इसी बात की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आप ऐसे कार्यक्रम में आए हो जो युवाओं के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। और अगर इस देश का युवा जागरूक हो जाएगा, इस देश की पीढ़ी जागृत हो जाएगी, तो भारत को 2047 में जो मोदी जी जब भारत को आजादी के 100 साल पूरा कर रहा होगा, तो दुनिया की कोई ताकत हमें पहले नंबर पर बनने से नहीं रोक सकती। is conducted through or via internet, through or via digital format, and therefore security of this modem is very, very important, because this has a lot of advantages for the system with regards to efficiency. This has a lot of advantages with regards to the speed, the human hours that are spent, but all this will be counterproductive if enough security is not provided for the use of such platforms. And therefore I think functions like this provide knowledge, provide information about how you can keep your data safe, how you can keep your your use with regards to internet safe, and this is very paramount. And I think this is enshrined in the Constitution as well, that the privacy as well as the right to feel secure and safe is a guaranteed constitutional right, which is being effectively protected through functions like this. And therefore it is paramount and important to see how the youth channelizes this effort, how the youth uses the internet as well as the cyberspace, and at the same time feels secure. And we have to ensure as a nation, as a society, that there is no misuse of this platform. Cybersecurity is one of the major areas which the entire country is looking at. Honorable Prime Minister Narendra Modi has also emphasized that data security is the paramount agenda of the government of India, and I'm sure in the times to come we will have absolute watertight laws as well as watertight systems for data security as well as cyber security. Having said that, today's event, I believe, is attended by a lot of youth, students, and different sections of the society are here to understand the importance and the manner in which cyber security can be practiced. I wish I had some more time to sit here and listen to the thoughts as well as the processes that are being undertaken by different organizations to meet this end. However, as you know, this is one of the most crucial and important weeks for us. We are in the midst of some elections, and therefore I'd like to excuse myself and conveying my best wishes, conveying my best wishes for this function as well as for each of your future career. And I hope that you take a clue from today's program with regards to cyber security and implement the same in your day-to-day functioning. Thank you for having me here today, and once again, all the best and congratulations. On stages saying the future belongs to you.
अपना ख्याल रखो, यहाँ डेंजर है, वहाँ डेंजर है, हर जगह डेंजर है. But this is a fearless generation, isn't it? Are we or are we not? A fearless generation because we were born in that generation. When I say we, I'm not talking about me, I'm talking about you. Born in the internet generation. What is the average age of the room over here? Anybody 15, 16? 15, 16? तब तो तुम generation alpha हुए यार. Gentlemen and ladies, my senior friends, Gen Z भी अब पुराना हो गया है. Gen Alpha का टाइम है. Gen Alpha के लिए ताली बजाओ please everyone. With every passing year, this generation is changing. But the Gen Z, most of you were born in the internet generation. सबसे पैदा हुए तब से आपको मालूम है इंटरनेट क्या हुआ करता था. We weren't that. I'm the Y2K generation, by the way. Does anybody remember what's Y2K? My senior friends would definitely know this thing. Y2K was something जब साल 1999 से साल 2000 शुरू हो रहा था. That was called Y2K. हम लोगों की हालत खराब थी. हम लोगों को ऐसा डर बैठा दिया गया था हमारे दिमाग में कि कंप्यूटर्स को तो पता ही नहीं कि 1999 के बाद में होना क्या है, क्योंकि नंबर डिजिट्स उतने ही थे. तो लोगों को लग रहा था कि जैसे ही 31 दिसंबर की रात को 12 बजेंगे सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे. इस टाइप की अफवाह उड़ी थी मार्केट में और सब लोग इस तरीके. और तब कंप्यूटर्स ऐसे डब्बे हुआ करते थे, छोटे छोटे मोबाइल फोन्स भी नहीं थे. We were that generation when we used to have साइबर कैफेज तो पता होंगे यार. साइबर कैफेज अभी भी होते? नहीं होते, बंद हो गए. नया साइबर कैफे खुला था. आई वॉज योर एज. उस टाइम पे याहू चैट रूम्स हुआ करते थे. याहू चैट रूम्स पे दुनिया भर के लोगों से बात होती थी, लेकिन फेस नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था. आई स्टिल रिमेम्बर मेरी चैट शुरू हुई एक लड़की के साथ. जी बिल्कुल, कुछ ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा. बड़ा सुंदर बातचीत शुरू हुई. उसने मेरे बारे में पूछा, मैंने उसके बारे में पूछा. 6 महीने तक के हम दोनों के बीच में चैट चलती रही. फिर डिसाइड हुआ कि भाई एक दिन हम मिलेंगे. मैं परफ्यूम लगा के एकदम बढ़िया तैयार होके पहुंचा. मैंने बोला कहाँ मिलेंगे? तो बोले उसी साइबर कैफे पे मिलते हैं जहां से हमारे प्यार की शुरुआत हुई है. तो उसी साइबर कैफे पे पहुंचा. उसने मुझसे कहा कि लाल कलर की ड्रेस पहन के आना और लाल टोपी. मैं बकायदा एक बैंड मास्टर की तरह लाल कलर के कपड़े और लाल टोपी पहन के और लाल गुलाब लेके उस साइबर कैफे में पहुंचा. ज्यादा लोग नहीं थे, बस वो साइबर कैफे का जो ओनर लड़का था वो था और 2-3 लोग बैठे थे. छोटे छोटे केबिन्स हुआ करते थे. मैं केबिन पे बैठा. मैंने बोला कहाँ हो? क्या था? एक सेकंड. Did you guys know what is ASL? What a generation, you guys don't know what is ASL. एक टाइम पे चैट शुरू होने से पहले बात होती थी ASL, एज सेक्स लोकेशन, कि भाई आपकी एज क्या है, are you a boy or a girl, and लोकेशन क्या है. तो हम लोग वहां पर पहुंचे. उसने बोला कि so where are you? I said I'm right over here in the cyber cafe. तो बोले ठीक है, get up. I got up और वो सामने खड़ा था वो साइबर कैफे का ओनर लड़का रमेश. मुझे उस दिन पता चला कि रिंकी 1999 was not रिंकी 1999, was रमेश. And that was the first time मुझे पता चला स्कैम क्या होता है. जब कोई लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो we all speak up. जब हम देखते हैं कि ट्रेन में हुआ, बस में हुआ, लेकिन ऑनलाइन भी होता है या नहीं? So I think we all need to have this collective consciousness, and I'd like to congratulate Akshat and Nivedita and Niti for this impactful, meaningful NGO and project both. Because what now? It means act now. And if you act now, you will save so many lives. So all the best to all of you all, and don't forget, 15th of January, every citizen has a fundamental right, which is the right to vote, and Gen Z must participate in the process of voting. Thank you all. Good afternoon, ladies and gentlemen, and my dear children. You are my main audience today, and we want to instill in you certain cyber values. So What Now has mobilized this wonderful program, and I'm sure that many discourses you have heard
may increase your wisdom, may increase your knowledge, may make you a better human being. But the discourse that you are going to hear today can save your life, can save your lifelong earnings, and can even save your reputation. So, this is the importance of cyber security. In India, there are about 70 crore or 700 million smartphones. However, when we did a small empirical study, we found that many netizens using these smartphones are not aware of the features of the smartphone. For instance, there are about 1,10,000 features in a smartphone. But most of the netizens are using only 40 to 50 features. So 40 to 50 out of 1,10,000 features. So that makes a very, very big gray area or a black hole. 40 to 50 features out of 1 lakh odd features in the phone. So that means the predators, the scamsters are utilizing this gray area which person using that phone is not aware. For instance, when I asked students like you, how many of you are using your Instagram account with two-factor authentication? So I see about 20-30%. That means 70% people are open to getting their Instagram hacked even now. So this is why cybersecurity awareness is very important. And the best bulwark against cybercrime is cybersecurity. So that's why we tie up with organizations like What Now to redress the grievances of people. And since you youngsters are having impressionable minds, we want to instill these cyber hygienic values in your mind so that later on we do not succumb to the threat, to the monster, to the hydra-headed monster of cybercrime. So when we started this Maharashtra Cyber Security Project, we wanted to give more security, more cyber security sense to the netizens and citizens. And I can tell you that in this project, under one roof, we have brought together the world's best technologies, the world's best experts, and most experienced and reputed police officers under one roof. So when you dial 1930, you can actually set the process of law into motion. For instance, if a person is threatening you with revenge porn, for instance, a very recent case which came to me, you just dial 1930 and leave the rest to us. How many people have used 1930? Only 3 people in the hall. So that's why this awareness is important, my dear friends. Because if you don't know 1930, one day you can lose your phone, you can even lose your life. You can lose your whole life earnings, and you can lose your reputation, character assassination, and whole lot. So as they say that a picture speaks 1,000 words, I'm going to show you a small film that we have made, a small documentary which encapsulates how important cyber security is. साइबर अवेयरनेस और इसी जागरूकता की मुहिम के लिए मैं व्हाट नाउ का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसमें बच्चों को इनवाइट किया एंड सिंस दे हैव इम्प्रेशनेबल माइंड तो ये वैल्यूज़ उनके साथ ज़िंदगी भर जाएंगी। और मैंने यहाँ तक आह्वान किया बच्चों को कि अपने सीनियर सिटीजन जो उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको बारे में भी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताएं, जिससे कि वो इसके विक्टिम ना बने
और साथ ही साथ अपनी फैमिलीज को सेफ रख सकें, क्योंकि साइबर क्राइम वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बन चुका है। सर, जिस तरह देश भर में स्कैम हो रहा है, कहीं ना कहीं उस पर ये अवेयरनेस बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है सर देश भर में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, साइबर क्राइम नोज नो नेशनल बाउंड्रीज। यहाँ पे उज्बेकिस्तान में भी बैठा व्यक्ति इंडिया में साइबर क्राइम कर सकता है। इसको रोकने के लिए बाद में इसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नेशनल बाउंड्रीज इन्वॉल्व होते हैं, क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व होता है, मनी म्यूल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसको रोका आसानी से जा सकता है। उसके लिए साइबर जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और साइबर जागरूकता ही इसका सबसे सटीक जवाब है। मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने महाराष्ट्र साइबर और व्हाट नाउ के साथ MOU किया है और हमें इस काबिल समझा है कि हम कुछ हेल्प कर सके सोसाइटी की। और ये जो एक थोड़ा गैप है यूथ में और लॉ इन्फोर्समेंट में, जहाँ छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, यूथ है, वो डरते हैं पुलिस के पास डायरेक्टली जाने में, तो वी ब्रिज दैट गैप विद काउंसलिंग एंड देन लॉ इन्फोर्समेंट सर टेक्स ओवर। सो इट्स अ वेरी गुड कोलैबोरेशन, और इससे हम काफ़ी जाने बता सकते हैं और काफ़ी साइबर क्राइम को कम कर सकते हैं। जिस प्रकार से सर ने आज हमें यहाँ पे आकर एम्पावर किया है और साइबर वॉरियर का बैच दे करके इतने सारे बच्चों के बीच में साइबर वॉरियर तैयार किए, एक मुहिम चालू की है। सर को खुद HSNC यूनिवर्सिटी ने यहाँ प्रोफेसर इन साइबर का इतला दिया है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये कॉन्क्लेव बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और फिर से महाराष्ट्र साइबर और हमारे यशस्वी यादव सर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अपने बहुमूल्य कीमती समय से समय निकाल करके उन्होंने आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।